Greetings, everybody. I hope you are all fine. Today, I'm going to discuss about the topic mammalian digestive system. It's a very important and interesting topic which will be discussed here. This lesson will include these topics: process of digestion, gastrointestinal motility and its control, oral cavity that includes salivary glands, teeth, and tongue. I will also be discussing about the swallowing, deglutition, pharynx and esophagus, stomach and gastric secretion, small intestine and their accessory glands like liver and pancreas, and the large intestine. One important thing is to note that the accessory glands do not only contain the liver and pancreas but also the salivary glands. So these three glands are the accessory glands for the digestive system of a mammal. If you look at the process of digestion in mammals, the first step is the ingestion process that includes the taking in of food or eating, and after that, after ingestion, there comes another process that is peristalsis. So peristalsis is controlled by our autonomic nervous system. That's why this action is involuntary. What happens in this process that is sequential muscular contractions that move the ingested nutrients. जो भी फूड हम इंटेक करते हैं तो वो आगे पुश होता है because of the sequential muscular contractions of the muscles present in esophagus or any digestive tract like small or large intestine. And after peristalsis, segmentation may occur within the stomach that include the mixing of contents in the digestive tract, or it may take place in another tract like small or large intestine, and specifically small intestine and stomach that involves segmentation process. So in this process जो भी कंटेंट्स फूड होते हैं वो सीक्रेशन के साथ मिक्स होते हैं बिकॉज ऑफ द मस्क्यूलर मूवमेंट्स ऑफ द stomach and the small intestine. Secretion secretion of hormones, enzymes, and specific ions and chemicals that take part in digestion. So secretion may be of anything. If we talk about salivary glands, it secretes saliva. If we talk about the secretion of esophagus, it includes the secretion of mucus. The small intestine also the small intestine also releases or secretes mucus. We can also think about stomach as well. It also secretes some sort of enzymes or hormones or as well as mucus. So whatever the secretion they take place within any digestive tract, so that involves hormones, enzymes, and specific ions. Or enzymes can be from the accessory glands like liver, pancreas, and the salivary glands as well. Digestion. So this process is the conversion of macromolecules into smaller subunits. जो भी macromolecules हैं, for example, say proteins, fats, and lipids, these are macromolecules. So these macromolecules during the process of digestion are converted into smaller subunits. In case of proteins, these are converted into amino acids. In case of lipids or fats, these are converted into fatty acids or glycerol. Absorption, the passage of usable nutrient molecules from the small intestine into the blood stream. एब्जॉर्प्शन तब होती है जब फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सब यूनिट्स, तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेल्स लाइक विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेसन. एंड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स, वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर
दाखिल हो दाखिल होते हैं, and at the end the defecation process, the elimination of undigested or unabsorbed material from the body by excretion, ये final step है. So you can see here all the process start from the taking in of food through mouth, and then it will travel through the esophagus and into the stomach, and from when it enters into the stomach the food is converted into chyme, and the liver from this region, and the pancreas this region, and the liver, both of these will secrete their own specific secretion. The bile will be secreted from liver, and the pancreatic juice will be secreted from the pancreas. So the pancreatic juice will contains enzymes, and liver doesn't contain any type of enzyme, but it has the function, its bile has the function of emulsifying the fats that are present in the small intestine. So both of these secretion will travel towards the duodenum of the first intestine, of the small intestine. So this whole process of digestion will be discussed in this lesson. Gastrointestinal motility and its control. यहाँ पर मोटेलिटी का मतलब ये है कि जो भी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेट के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं फूड की, इसे हम गेस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी कहते हैं. एंड इट्स कंट्रोल, उसकी कंट्रोल कैसे होती है, मतलब किस नर्वस सिस्टम के पार्ट से ये कंट्रोल होती है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. सेरोसा, it is a thin layer of connective tissue that forms a moist epithelial sheet called peritoneum, which lines the entire abdominal cavity. Abdominal cavity के अंदर जो भी internal lining है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, एक ऐसी कवरिंग जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है. द स्पेस बिटवीन सच ऑर्गन्स एंड बॉडी वॉल इज नोन एज सीलम. और जो भी स्पेस है इन ऑर्गन्स और इस बॉडी वॉल के बीच बिटवीन, तो इसे हम सीलम कहते हैं. सेरोसा के अंदर सर्टेन लेयर्स पाए जाते हैं. द फर्स्ट लेयर इज मसल लेयर. This is divided into two layers. First layer is known as longitudinal muscle layer, and the other is known as circular smooth muscle layer. फिर मसल लेयर के बाद सब म्यूकोसा आता है. दिस लेयर इज comprised ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स. And whatever the lumen and hollow cavity that is present within the within the digestive tract is known as lumen. So you can say that it is a central opening or cavity that comes after submucosa. Two types of movements are involved in gastrointestinal tract. Gastrointestinal motility के अंदर दो प्रोसेसेस हैं, दो टाइप्स के होते हैं मोटेलिटी. एक होता है सेगमेंटेशन. Segmentation occurs when the muscle layers undergo coordinated contractions and relaxation. The food mixes with digestive secretions for effective absorption and digestion. As I have already discussed about segmentation, that it is the mixing of food and secretion secreted by certain organs or tract. And peristalsis occurs when circular smooth muscles, जब circular smooth muscles contract करते हैं food के behind. Suppose if the food is present here in the esophagus, and behind that these muscles behind the food, the muscles will relax, and in front of it it will be if in front of the food the muscle will relax, and behind it it will contract in order to push the food into the stomach. So that's why whenever the food that is being taken, so the movement behind that food will be of contraction, and in front of it it will be relaxation in order to
allow the food to pass further into the stomach. So this type of movement is known as peristalsis. In sphincters, these are the rings of smooth or skeletal muscle at the beginning or end of a specific region of a gut. तो स्फिंक्टर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि स्मूथ या स्केलेटल मसल के बने होते हैं, किसी भी ट्रेट के बिगनिंग में या उसके एंड में पाई जाती है. ओरल cavity, which is also known as mouth. So if you see here at oral cavity, you can see the lips are highly vascularized, जिसके अंदर बहुत से ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, एबंडेंस ऑफ नर्व एंडिंग्स, एंड कंटेन्स skeletal muscle tissue. Lips play important function in retaining food as well as for phonation. फूड को रिटेन करने, फूड को होल्ड करने के हेल्प करती है, और उसके बाद लिप्स का फोनेशन में भी इसका फंक्शन परफॉर्म होता है. फोनेशन दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ साउंड. जब हम स्पीक करते हैं तो साउंड में वेरिएशंस आती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिप्स. द ओरल केविटी हैज़ ए मस्क्यूलर टंग ऑन इट्स फ्लोर. ओरल केविटी के फ्लोर में एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विच वी कॉल इट टंग. द रूफ ऑफ ओरल केविटी इज़ फाउंड बाय हार्ड पैलेट एंटीरियरली. अगर हम रूफ के इंटीरियर हिस्से की बात करें, जो अपर रूफ है ओरल केविटी का, तो उसमें एक हार्ड पैलेट होती है जो कि इंटीरियरली लोकेटेड होता है, और सॉफ्ट पैलेट जो कि यूबुला के करीब होता है वो सॉफ्ट पैलेट होती है, और वो पोस्टीरियरली है. और सॉफ्ट पैलेट में एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ हैंग करता है, दैट इज़ यूबुला. It is a muscular structure that hangs down from the middle of the soft palate. The cheeks are located laterally, और जो cheeks होते हैं वो lateral side में मौजूद होते हैं. So these are the lateral sides. And if we talk about their location, they are connected posteriorly with the pharynx. वो pharynx से posteriorly connected होते हैं. The jaws are lined with teeth having various shapes and functions for the breakdown of food mechanically. So as I've already talked about the mechanical digestion that involves the physical process, physical breakdown of the food with the help of teeth. And the teeth may be of various shapes and may perform various functions. In mammals, in case of carnivorous animals, if we talk about their canine is well developed for tearing food. And if we talk about herbivorous animals, they have grinding teeth. They have well developed grinding teeth in order to grind the grass or any vegetation they eat. The upper jaw is fixed and the lower jaw is movable. It is very important point to note that जो ऊपर वाला जो jaw है वो fixed है, immovable है. And if we talk about the lower jaw is movable. Salivary glands and secretion. The saliva is a watery secretion. pH range 6.0 to 7.0. सलाइवा की सीक्रेशन होती है, और जो pH है 6.0 बिटवीन 6.0 टू 7.0. और ये एक ऐसी वाटरी सीक्रेशन है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड इज़ रेगुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये एक पैरासिम्पैथेटिक या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उससे कंट्रोल होता है. सलाइवरी सीक्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के होते हैं, या इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है सीरस सीक्रेशन और दूसरा होता है म्यूकस सीक्रेशन. दोनों सीक्रेशन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है. अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी गाइडन एंड हॉल के दोनों सीक्रेशन के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं.
वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? लेट्स डिस्कस. द सीरस सीक्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ टायलिन और अल्फा अमाइलेज. सीरस सीक्रेशन, टायलिन एक एंजाइम है, अल्फा अमाइलेज तो ये भी एक प्रोटीन है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन एंजाइम एंड एंजाइम्स आर मोस्टली protein. This enzyme partially digests the starch into maltose. Thus, chemical digestion of food begins in mouth. इसलिए we can say that the chemical digestion of food begins in the mouth because of the fact that serous secretion contain an enzyme called tyelin that converts starch into maltose. And what about mucus secretion? It is also the part of saliva. The mucus secretion is composed of mucin, another protein that lubricates and protects surfaces. The saliva also contains an enzyme called lysozyme. Saliva के अंदर एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है, lysozyme भी हो सकता है, that kills bacteria, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है. बिसाइड दिस, इसके साथ साथ द सलाइवा कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस एंड थायोसियानेट आयंस, ये चीज़ें भी मौजूद होती हैं. अच्छा, बाइकार्बोनेट आयंस ये बफर केमिकल्स होती हैं, और जो लाइसोजाइम है हेल्प द थायोसियानेट ions to become bactericidal and help killing bacteria. लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि थायोसियानेट आयंस को हेल्प करती है ताकि वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक साइटल इफ़ेक्ट पैदा करें, ताकि वो बैक्टीरिया जो है किल हो सके. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बाइकार्बोनेट आयंस, so as I've already talked, these are buffer chemicals that help reduce the acidificates of oral bacteria. So whenever the bacteria feed on glucose present within our mouth, so they release acid, and that acid will be reduced with the help of these bicarbonate ions. So that's why these are very helpful uh, for our oral cavity to maintain a alkaline environment within the cavity. The oral cavity of humans contain 3 pairs of salivary glands. ओरल कैविटी अगर हम मखसूस ह्यूमन्स की बात करें, सो उनके 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के. द नंबर 1 इज़ पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि पिन्नाई के बेस में पाए जाते हैं, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज का होता है, इसलिए इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टंग. और तीसरा जो पेयर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द lower jaw. It is reported that a normal person secretes 1 to 1.5 liters of saliva in 24 hours. So let's discuss about the tongue. The tongue is a muscular organ which is attached posteriorly at middle with the floor of the oral cavity through hyoid bone. So if we talk about this muscular layer, तो ये posteriorly attached है और middle पे भी attach होता है. And if we talk about its tip region, so it is not attached, it is free from its apex region, or it is attached with the through the bone that we call it hyoid bone. The upper surface of tongue has numerous projections or papillae which contain nerve endings for the sense of taste. तो papillae एक ऐसा स्ट्रक्चर है, you can see here in this structure. So this one is the papillae of the tongue that contains the sensory cells that help in the taste of food. Frenulum, it is a fold of mucous membrane located under the surface of tongue. ये mucous membrane की जो foldings होती हैं टंग के surface के नीचे से, तो that one is known as frenulum. There are 4 main functions of tongue: mastication, swallowing,
taste, and speech. So now let's talk about the teeth. The teeth are located along both upper and lower jaws. Such condition is termed as थीकोडोंट. एक ऐसी कंडीशन जिसमें टीथ दोनों अपर एंड लोअर जॉस के लाइनिंग में मौजूद हों. सो दिस कंडीशन इज नोन एज थीकोडोंट. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स possess such condition. Most of the mammals. द थीकोडेंट इज प्रेजेंट इन मैमल्स. सर्टेन रिप्टाइल्स, कुछ रिप्टाइल्स के अंदर भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल्स. एंड इन डिस्टिंक्ट एनिमल्स सच इज डायनासोर्स इन द पास्ट, they also contain this condition. The teeth are covered with enamel, the hardest material in human body. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट मटेरियल वो एनामिल है, जो कि टीथ की कवरिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. In Diaphodont animals having two sets of teeth during lifetime, so definitely human includes in this group. First, the first set of teeth is milk or deciduous teeth. Deciduous means जो फाल हों या जो गिरें, which are replaced by permanent teeth. जिसकी जगह परमानेंट टीथ जो होते हैं. मोस्ट मेमल्स आर डायफिडोंट. बहुत से मेमल्स डायफिडोंट होते हैं बिकॉज दे possess टू सेट्स ऑफ टीथ. द नंबर ऑफ deciduous teeth is 20 and the number of permanent teeth is 32. Heterodont animals having different shapes and sizes of teeth. Among 32 permanent teeth, so you can see here in case of human teeth, 8 are incisors which are located in the front side. They help in cutting, and 4 canines which help in tearing the flesh, and the premolars and molars which are 8 and 12 in number respectively. They help in grinding the food. And if we note about the last teeth that are molars, so molars do not have deciduous predecessors. इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कोई भी प्रीडिसेसर्स नहीं होते. ये परमानेंट ही होते हैं, शुरू से ही ये परमानेंट ग्रो होते हैं. बाकी जो फर्स्ट 3 हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स, ये डेसिडुअस हैं बिकॉज दे फॉल एंड आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. Incisors function in cutting and biting because of the presence of sharp edges. Incisors के जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है इनके फॉर कटिंग एनी टाइप ऑफ फूड और biting any type of food, such as we can say that they have sharp edges at their front side. And if we talk about the canines, these are very highly developed in carnivorous animals like cats and dogs. The sharp pointed canines function in tearing and pulling the flesh. Both premolars and molars are used for grinding and crushing the food, and the chewing muscles are innervated by the motor branch of the fifth cranial nerve. The mastication process, जो भी mastication process होता है, chewing process, its motor branch is concerned with the fifth cranial nerve within our body. The whole chewing process is controlled by the nuclei, which is present in the brain stem. So let's move forward with the diagram here. You can find here the incisors which have sharp edges for cutting or biting any type of food, and at the side of that there's a canine that has pointed structure. And if you talk about premolars, that they come after the canine. So these 3 are the deciduous teeth that are replaced by the permanent teeth. The molars, they are located at the end of the all teeth. Enamel is the hardest part of the teeth. It may contain the dentine. It may contain within its pulp cavity as well, root canal that contains blood vessels and nerves as well.
and beneath this nerves and blood vessels there is a bone. And superficially you can say that there are three main parts of teeth, that is crown, neck, and root. So you can see here the details of this teeth, that is incisors, canines which have sharp pointed edges, premolars and molars. Swallowing, which is also known as deglutition. Swallowing occurs through three stages: voluntary stage, pharyngeal stage, and esophageal stage. तो swallowing में तीन स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले वॉलंटरी स्टेज होती है, जो कि हम वॉलंटरी ऑन आवर ओन विल हम फूड को swallow करते हैं. फिर उसके बाद जो pharyngeal स्टेज है इसका, और esophageal स्टेज, दिस इज कंट्रोल्ड बाय आवर autonomic nervous system and it is not on our own will. Voluntary stage begins the swallowing process. The food bolus, जो कि bolus है, passes involuntary through pharynx and enters esophagus. तो जब ये फूड अगर फेरिंग से पास होगा, सो दिस प्रोसेस, दिस स्टेज इज नोन एज फेरेंजियल स्टेज. फिर उसके बाद ईसोफेगल स्टेज होता है. दैट मीन्स दैट द फूड पासिस थ्रू द ईसोफेगस एंड रीचेज द स्टमक. It is to note that entry of bolus into the nasal pharynx is prevented by the elevation of soft palate against the posterior pharyngeal wall. तो हमारे जो नसल फेरिंग से उसके अंदर वहीं पर फूड इंटर क्यों नहीं होता, इसका ये रीज़न है कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो एलिवेट होती है, उसकी पोजीशन ऊपर एलिवेशन होती है. किसके खिलाफ? पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के खिलाफ. दिस इज़ वाई द फूड डज नॉट इंटर इनटू द नसल फेरिंग्स. और फूड लेरिंग्स के अंदर भी इंटर नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लिड लाइक कवरिंग कॉल्ड एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस की वजह से लेरिंग्स के अंदर फूड शामिल नहीं होता. फेरिंग्स एंड ईसोफेगस. द फेरिंग्स इज कनेक्टेड एंटीरियरली टू ओरल एंड नसल कैविटी. अगर हम फेरिंग्स का एंटीरियर रीजन की बात करें, जो आगे वाला हिस्सा है, तो उससे वो ओरल और नसल कैविटी से के साथ वो कनेक्टेड है. और अगर हम फेरिंग्स के पीछे वाली बात करें, पोस्टीरियरली द फेरिंग्स इज कनेक्टेड टू द ईसोफेगस एंड लेरिंग्स. Pharynx performs both respiratory and swallowing function, but it is to note that both functions are not performed at the same time. So, for example, if we say the swallowing of food, so respiratory function will be blocked temporarily. Pharyngeal constrictors are the three muscles of pharynx that help in swallowing. Pharyngeal constrictors के अंदर तीन muscles होते हैं जो कि swallowing में help करती है. The esophagus is a tubular structure. Esophagus जो कि pharynx के बाद आता है, एक ऐसा tubular structure है that leads bolus from pharynx to the stomach. Or esophagus, it is located between trachea and spinal cord. The esophageal secretion is entirely mucus that helps lubricates the food. तो esophageal secretion एक ये entirely इसकी composition की बात करें तो ये सब के सब जो होते हैं mucus की composition में शुमार होते हैं. helps lubricate, और ये बोलस को lubricate करते हैं ताकि वो आसानी से stomach के अंदर दाखिल हों. The esophagus is lined with simple mucus glands, so that's why they secrete mucus. स्टमक एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन. गैस्ट्रिक सीक्रेशन वो सीक्रेशन होती है जो कि स्टमक के अंदर होती है. सो गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इट इज़ द सीक्रेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन द स्टमक. स्टमक इज ए जे शेप्ड मस्क्यूलर और पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट विच इज़ कनेक्टेड विद द इसोफेगस इंटीरियरली. अगर हम स्टमक की एंटीरियर रीजन की बात करें वो इसोफेगस से कनेक्टेड है, और अगर हम पोस्टीरियर रीजन की बात करें वो ड्यूडेनम से कनेक्टेड होते हैं. द स्टमक रिसीव्स बोलस फ्रॉम इसोफेगस. स्टमक बोलस को रिसीव करता है इसोफेगस से. बोथ एंड्स ऑफ द स्टमक आर गार्डेड बाय टू वाल्व्स. दो वाल्व्स होते हैं, ए गेट लाइक स्ट्रक्चर दैट guard or protect the stomach from any type of danger. But if we talk about in case of passage of food,
if the food that enters from the esophagus into the stomach, तो वो फूड वापस दाखिल जो वापस ईसोफेगस की तरफ नहीं जाता. It enters into the stomach and does not go back into the esophagus because of the fact that there is a presence of cardiac sphincter. कार्डिक स्फिंक्टर की वजह से वो फूड ईसोफेगस वापस नहीं. बट इन सर्टेन कंडीशन लाइक वॉमिटिंग, सो द फूड मे come back towards the esophagus and ultimately can be removed through our mouth in case of vomiting. But in usual condition, because of the presence of such valves, the food doesn't move back. While the posterior valve, जो कि pyloric sphincter है, both of these valves prevent the backward flow of gastric contents. Both mechanical and churning, we can say mechanical involves churning and chemical digestion that involves enzymes takes place within the stomach. Both type of digestion takes place within this. As in mouth, similar situation can occur. The stomach can also store food for several hours after which the food turns into chyme. जब स्टमक फूड को स्टोर करते हैं सिवरल आवर्स में, तो वो फूड कायम की फॉर्म में, पेस्ट लाइक फॉर्म में या एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कायम कहते हैं. एंड इंटरनली अगर हम स्टमक का इंटरनल एनाटॉमी की बात करें, द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. द फर्स्ट रीजन इज कार्डिया एंड द सेकंड वन इज फंडस, द थर्ड वन इज corpus and the fourth is pylorus, which is the end region of the stomach. The largest part of the stomach is corpus. Corpus largest part is stomach का, which serves as the main reservoir for food, जो कि main reservoir है food का, because it stores large amount of food as compared to the other parts of the stomach. It is the central part of the stomach. ये मरकजी part है stomach का. The upper part is cardia. सबसे जो first part है वो cardia है, upper part है, while the lower part is known as pylorus. Fundus comes after cardia. फिर कार्डिया के बाद फंडस होता है. And after that fundus there comes the largest part, that is corpus. Stomach and gastric secretion. That let's continue this topic as usual. In other gastrointestinal tracts there are 4 layers. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 4 लेयर्स होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में. सबसे पहले मिकोसा होता है, फिर उसके बाद सब मिकोसा. देन इन केस ऑफ स्टमक, इफ वी टॉक अबाउट दैट, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मस्कुलरिस एक्सटर्निस एंड सिरोसा. द इनर मोस्ट लेयर इज मिकोसा. इनर मोस्ट जो लेयर होता है मिकोसा होता है, दैट विच कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स, बिकॉज those mucus will be secreted into the lumen of the gastrointestinal tract. It contains mucoid cells. तो इनके अंदर mucoid cells होते हैं which that secrete mucus and bicarbonate ions, the buffer chemicals. The outermost layer is serosa. सबसे outermost layer is serosa, which help in inclusion, that prevents friction. Before mucosa, the submucosa contains blood vessels. म्यूकोसा के अंदर सब म्यूकोसा होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, नर्व्स भी मौजूद होते हैं. In order to coordinate activities of the stomach or any type of gastrointestinal tract. At this layer, इस layer में longitudinal folds called rugae are present. This surface is further subdivided by furrows called gastric pits. तो उन rugae के अंदर gastric pits भी हो सकते हैं. The muscularis externis is composed of 3 muscular layers. मस्कुलरिस एक्सटर्निस के अंदर 3 मस्कुलर लेयर्स हो सकते हैं. द नंबर 1 इज ऑब्लिक, सर्कुलर एंड द थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर. स्टमक एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन. तो इसका जो थर्ड पेज है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन ग्लैंड्स ऑफ म्यूकोसा, 3 histological regions in stomach can be considered. If we talk about their tissues, so according to this fact, that there are 3 main regions within the stomach histologically. The first region is cardia.
that contains cardiac glands which secrete mucus only, जो कि सिर्फ mucus को secrete करते हैं. The second region includes fundus and corpus, both the largest part of the stomach and fundus, where gastric and funding glands are present. In this region, main mucoid cells are present. Also, this region contains parietal or augmenting cells. So you can see here the augmenting gland at the right side of the slide. The augmenting glands contain four main parts. The number one part is surface epithelium. It may also contain mucous neck cells, augmentic or parietal cells that help secrete the mucus, and the peptic or chief cells. So all of these are present within the augmenting gland in the second region. So the oxygenating cells secrete hydrochloric acid and intrinsic factor. The intrinsic factor is important for the maturation of RBCs. Intrinsic factor जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स, इसका फंक्शन ये होता है कि वो आरबीसी के मेचुरेशन में हेल्प करते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 in small intestine and health of neurons. The gastric glands are also chief cells or zymogen cells that produce pepsinogen, which is converted into pepsin. Pepsinogen is in inactive form, which is converted into the active form known as pepsin. The third and distal region. तीसरा जो region है pylorus contains pyloric glands which produce mucus and gastrin hormones. Throughout the body of stomach, endocrine cells secrete serotonin that inhibits gastric acid secretions. So now let's talk about the small intestine and its accessory glands like liver and pancreas. The small intestine comes after the stomach. It is 6 meters long and 3 to 4 centimeter wide. The small intestine is divided into three parts. इनके तीन parts होते हैं. The first part is duodenum that receives the secretion from the liver and pancreas, and the second part is jejunum, and the third part is ileum. The duodenum is about 30 centimeter long. All the secretions of pancreas and liver enter duodenum by pancreatic and bile duct for the breakdown of macromolecules. The bile is produced by the liver and is stored by the gallbladder. Gallbladder जो स्टोर करता है bile को, जो that is produced within the liver and is stored by the gallbladder. The duodenum secretes hormone called cholecystokinin that stimulates gallbladder to release bile. And if the gallbladder is filled with the bile, so the duodenum has the ability to secrete an hormone, और उस हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन. तो इस हार्मोन का फंक्शन ये होगा कि ये गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल को सीक्रेट करे. एंड एसिनर सेल्स ऑफ पेनक्रियास, और जो पेनक्रियास के अंदर एसिनर सेल्स होते हैं उन्हें भी ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है कि वो पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करे. फ्रॉम गाल ब्लैडर द बाइल इंटर सिस्टिक डक्ट. गाल ब्लैडर से सबसे पहले एक ट्यूब होगा, डक्ट होगा, सिस्टिक डक्ट दैट इज़ कनेक्टेड बाय कॉमन बाइल डक्ट. फिर उसके बाद सिस्टिक डक्ट से वो बाइल कॉमन बाइल डक्ट में आ जाएगा. दैट फाइनली releases bile into the duodenum. So you can see here in the below region there is a duodenum. The duodenum contains Brunner's glands. इनके अंदर Brunner's glands होते हैं that produce mucus rich alkaline secretion that contains bicarbonate ions, the buffer chemicals. Then these bicarbonate ions neutralize the acidic chyme of stomach. जो कि स्टमक से एसिडिक कायम आता है उसे न्यूट्रलाइज करता है, उसकी पीएच को जो होता है पीएच लेवल अल्कैलिन कंडीशन पे लेकर आते हैं.
Small intestine, liver, and pancreas. Let's move further. द ड्यूडेनम आल्सो प्रोड्यूसेस सीक्रेटिन. ड्यूडेनम के अंदर एक और भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है कोलिसिस्टोकाइनिन के बाद, दैट इज सीक्रेटिन. सो दिस हार्मोन stimulate the pancreas to secrete water and bicarbonate ions. So this means that both cholecystokinin and secretin play important role for the secretion of bile. Of specifically, the secretin plays its role in for the secretion of pancreatic juice along with the cholecystokinin. Bile is yellowish green in color. It doesn't contain any enzymes. However, it contains three types of components. तो बाइल के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर वन होता है वाटर, एंड द सेकंड वन इज सॉल्ट, एंड द थर्ड इज बाइल पिगमेंट सच इज ब्राउनिश. बाइलिरुबिन एक होता है जो कि ब्राउनिश येलो होता है, और जो बाइलिवर्डिन होता है वो ग्रीनिश होते हैं. बोथ पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स ऑफ वर्न आउट, जो कि डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं. द साल्ट्स, अच्छा साल्ट्स का काम क्या होता है? दे हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फिट्स. इज आई ऑलरेडी टोल्ड बाइल के अंदर कोई भी इंजाइम नहीं होता, सो दे इमल्सिफाई द फिट्स. द पेनक्रियाटिक जूस ऑन द अदर हैंड कंटेन्स इंजाइम्स. पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो टाइप ऑफ इंजाइम्स लेट्स डिस्कस. ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन by an enzyme called enterokinase produced by duodenum. So पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होता है. नाउ द ड्यूडेनम रिलीजेज एन एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज, जो कि उस ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन. द ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स. Chymotrypsin converts casein into short chain amino acids. Lipase completes the digestion of emulsified fats into fatty acids and glycerol. और जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर लिपेस मौजूद होते हैं वो इमल्सिफाइड फैट्स को, जो कि ऑलरेडी बाइल की वजह से इमल्सिफाई हो जाते हैं, तो फिर वो लिपेस एक एंजाइम है जो कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है, वो लिपिड की कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं. So you can see here that the digestion of fat is completed within this region of the small intestine. The middle region of the small intestine is jejunum, which is 2.5 meter long. Jejunum is specialized for further digestion and absorption of digested food. The process of digestion is completed by different enzymes produced by jejunum. So jejunum also has the ability to produce certain enzymes like maltase, sucrase, lactase, nucleotidase, that involve the breakdown of nucleic acid, and peptidase. Cellulose remains undigested, so there's no particular enzyme for the breakdown of cellulose. The final and third part of small intestine is ileum, which is about 3.6 meters in length. तो ये फाइनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टिन का. विटामिन B12 और जो बाइल साल्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम, ये सब इलियम के रीजन पे एब्जॉर्ब होते हैं. सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लासी सर्कुलरिस. दीज आर द रिंकल्स और फोल्ड्स प्रेजेंट इन द इंटरनल वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन. स्मॉल इंटेस्टिन में इस रिंकल्स होते हैं या कुछ ऐसे फोल्ड्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. दिस फोल्ड्स गिव राइज टू द फिंगर लाइक पोजिशन लाइक विलाई. ईच वायलस इज माइक्रोविलाई प्रोजेक्शंस. तो हर एक वायरस के अंदर माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन छोटे छोटे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस को इंक्रीज करते हैं. ईच वायरस कंटेन्स द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लैक्टिल्स जो कि ब्लाइंड लिम्फ वेसल्स होते हैं, एंड स्मूथ मसल्स भी होते हैं दैट हेल्प विलाई टू रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन. तो उन मसल्स, स्मूथ मसल्स का फंक्शन ये होता है कि वो रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली हो. असल लेक्टिल का काम क्या होता है कि वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं या रिसीव करते हैं. ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्ब अमीनो एसिड्स एंड मोनोसेक्राइड्स, एंड द लिम्फ वेसल्स ड्रेन फैट्स.
तो लैक्टिल्स जो कि फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल को रिसीव करते हैं, तो आगे जाकर लिम्फ वेसल्स वो फैट रिसीव फैट्स को ड्रेन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ड्रेन करते हैं इनटू द थोरेसिक डक्ट। फिर वहीं से थोरेसिक डक्ट से वो न्यूट्रिएंट्स दाखिल होंगे इनटू द सब क्लेविन vein. The liver takes some of the proteins or lipoproteins and export it to the blood stream. तो उनमें से कुछ लिपोप्रोटीन लिवर खुद रिसीव करेगा, यूज़ करेगा, और इट में एक्सपोर्ट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. The hepatic portal vein supplies all the nutrients to the liver that it stores. सो हेपाटिक पोर्टल वीन एक ऐसी वीन है जो कि ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेपाटिक पोर्टल वीन के ज़रिए लिवर के साइड पे प्रोविज़न होती है उसकी. फिर उसके बाद लिवर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसे मेटाबोलाइज करता है या तो उसे स्टोर कर सकता है. So if we talk about the inferior surface of the liver, it has 4 types of lobes. You can see here the yellow type. It is the left lobe, and the right one is brownish in color, and caudate lobe, and there is a greenish lobe that is called quadrate. So these are the 4 lobes that are present within the liver. Liver is the largest gland in our body, located at the upper part of the abdominal cavity. The liver is covered by peritoneum. इसकी covering peritoneum हम कह सकते हैं. The liver has 4 lobes. 2 lobes are obvious, from which one is large. Obvious, it means that they are visible. Large and the left lobe that is similar. 2 other lobes are caudate and quadrate lobes, which are similar as compared to the other obvious lobes. These lobes are made up of tiny lobules. ये जो भी lobes हैं छोटे छोटे lobules का बना होता है जो कि cubical shaped cells होते हैं liver के, जिसे हम hepatocytes कहते हैं. So the word itself suggests that these are the cells that are present in the liver. Hepa means liver and cytes means cell. The liver gets blood from 2 sources. 2 sources से liver जो है blood receive करते हैं. एक source से hepatic artery provides oxygenated blood to the liver. Oxygenated blood from the lungs will be provided towards from the heart, that will be provided towards the liver hepatic artery, and the hepatic portal vein provides nutrient rich blood from the small intestine. The large intestine is shorter but wider in diameter. So here I meant to say diameter. तो इसकी diameter ज़्यादा होती है as compared to the small intestine. So you can see here the main functions include reabsorption of water and chlorides, nutrients, synthesis of some vitamins, formation of feces, ejection out of the body. Villi are absent. इसमें villi absent होती है. It has mucus glands. The large intestine is divided into following 4 parts called cecum, colony, and it has cecum and colon and rectum, and the 4th part is anal canal. The vermiform appendix is a vestigial organ. It is 18 centimeter long. At the junction of small intestine and large intestine, ileocecal valve is present. Thank you so much.